So hello everyone. My name is Vikas Agrawal. I am the founder of a company called AIF and PMS Express India. So for those who don't know much about AIF and PMS, let me just take a minute to quickly explain. So AIF is nothing but alternate investment fund where the minimum threshold for investment is 1 crore, and PMS is nothing but portfolio management services where the minimum threshold for investment is 50 lakh. So, our platform, the whole idea of building up this platform of AIPMS.com is to give you more understanding about the domain, give you more details about, how do you choose the best AIs and PMS and create wealth for yourself. So me and my team, entire team, we are now emerging as one of the largest platform for investing in AI PMS. We are now 14 of us, and so our job is basically throughout the year. Our job is essentially to do complete research on AIF and PMS universe and give you the maximum and the best possible opportunities available to you. So what we do is at AIF and PMS, some of you are attending it for the first time may not know that at AIF and PMS Express India, we keep organizing these knowledge-based sessions. Whether you call it podcast or you call it whatever. The idea is to invite the industry experts. So therefore, we call it Ask the Expert Show. We invite them and try and read their mind and understand where are the opportunities. So this is a very interesting session that we have organized today. Everybody wants to know what's happening on the SME side, and we see a lot of SMEs are getting listed, and a lot of good news coming up that India as an economy is shaping up well. We are now $4 trillion, and we see a lot of companies to come up and get themselves listed on the SME platform and then move to main board. And we've already witnessing good amount of transition happening in this area for over 7.5, 8 years now as we speak. So I have invited two seasoned investor come fund manager come fund house, asset management company who has specialized in this area. So let me have the privilege of introducing both the gentlemen. So I'll start with Jaimin first. So Jaimin is the founder of the company. So he's been managing his own SME portfolio for over 100 odd crores, if I'm not wrong, for about 6 to 7 years, ever since he started shaping up in India, achieving an impressive CAGR return of more than 30% CAGR. If your money is growing at 26% year on year, your 1 crore becomes 10 crore on 10th year, it becomes 100 crore on 20th year, and it becomes 1,000 crore on 30th year. So you can imagine the kind of compounding that he is doing it. And in addition to his portfolio management, he is actively participating in numerous SMEs companies on the IPO listing side. His extensive involvement has enabled him to develop expertise in this area, and he's been able to do the complete due diligence in terms of selecting the right SMEs, because there are SMEs who come with wrong intentions also. That idea, their idea is to sort of take the valuations and run away. There are promoters who have this sort of conflict of interest, and therefore you need to have that sort of understanding to be able to recognize them well in advance. So thank you, Jaimin, for accepting the request and taking the time out. Appreciate that. Thank you so much. It is our privilege to be on this webinar and guide all the audience on how is the SME exchange working. But I'd like to just correct you over here. The returns has been generated by Kresha. So Kresha is one of the fund managers in the fund, Kresha Gupta. Okay, so the returns and portfolio have been managed by her. I have been looking after the SME companies, their strengths, and exactly what you said, recognizing which one is the right company and which one is where the promoter is just manipulating the company. So overall, I'm looking after the company management, admin, and even on the company recognition side, all of the company networks, having dealing with merchant bankers, dealing with all of the associates of the company. More on the investment side, Kresha has been taking part, and Ankush. So yeah, but at the end it is in the family. So we share the same knowledge and same guidance. Right. So you have taken the most difficult aspect in your hand, which is to sort of Yes. talk to promoters and understand his interest. So Bilkul, bilkul, bilkul. So basically, what happens is SME Exchange is more of a. It started as more of not I would say not unregulated, but not properly regulated body. It started in that way, but in today's market, in the span of 10, 12 years, it has grown, it has matured, and now we can say that most.
यस Yeah, सो with बहुत सारी कंपनियां अब जो आईपीओ के लिए आ रही है एसएमई पे, वो काफी मैच्योर्ड वे में आ रही है, जो पहले नहीं होता था. जी सो अभी एसएमई एक्सचेंज बहुत ग्रो हो चुका है. इवन एक्सचेंज ने जो क्राइटेरियाज है, रेगुलेटरी नॉर्म्स है, वो सबको भी स्ट्रिक्ट कर दिया है कि प्रमोटर्स कोई भी मैनिपुलेटिव चीजें ना कर पाए. सो ठीक है. दिस इज द बिग रीजन के लास्ट 6-8 मंथ्स में एसएमई एक्सचेंज पे जो भी कंपनीज लिस्ट हुई, उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए एंड वो ग्रो किया कंपनियों ने. तो आज इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आपसे. बिल्कुल सर. Let me also have the privilege of introducing Ankush. So he is the fund manager, Yes. as rightly mentioned by Jaimin. So Ankush Kumar Jain is seasoned chartered financial analyst (CFA) and ICFI member. He is the fund manager at StepTrade Share Services Private Limited since 2022. With over a decade of experience in Indian equity markets, capital markets, including various roles at Edelweiss Wealth Management and Raghunandan Securities, Ankush brings expertise in structured product. How do you structure the products basically, and how do you sort of create those different frameworks, and within those frameworks you create different structures and take out the best out of it, both for AIF commodities as well as currencies. His deep understanding of fundamentals, technicals, and derivative strategies positions him as valuable asset to the step trade share services team. Needless to say that, where he employs his extensive knowledge to assist clients in achieving their investment goals. So, thank you, Ankush, for accepting our request and taking the time out. Appreciate that you've joined today. Thank you so much. Yeah. So, So what we'll do is we'll start the session. So yes, absolutely. maybe to begin with, I'm not asking you question. Maybe you can run the presentation if you wish to. Tell us more about your organization, what you do, how do you do, and then maybe Jaimin can add in, chip in, and talk about how do you select those companies, or maybe you can start with either, or maybe you can start with giving us the overview and then the presentation, whichever way you guys are comfortable. Over to you guys. We'll take this way, Vikas. Ankush will have a briefing over the presentation, and then we will give you time to test our minds. So we'll take that way. So, thank you. Sounds good. Please go ahead. All right, I'll share my PPT first. Yeah. So, audience, if you have any questions, please type in your questions in Q&A box, and we'll be taking these questions with Ankush and Jaimin at the end of the presentation, and not during the presentation. So, Ankush, we have exactly 20 minutes. Maybe Okay. you can take 15 minutes, and then we'll have 15 minutes of Q&A. So, total duration is 30 minutes. Done. Okay, thank you. So, good evening, everyone. So today we are here to talk about our Category 2 and Category 3 AIF offering of structured share services. And it's on a new investment funds that is focused on investing in SMEs in India. So before introducing our AIF fund, I would like to first explain why we believe SME funds is today's time need, and why we believe the SMEs companies will grow immensely in the next 5 to 7 years as well. And to understand this, we divide SMEs growth in two phases, pre-COVID and the post-COVID phase. So in this chart, we can see the S&P BSE SME IPO index has delivered a 58% CAGR return in the last 10 years, while the BSE main board IPO index has delivered a 20% CAGR return. So this is clearly 38% of alpha of SME IPO index. But the most important point to be understand here is in the pre-COVID phase, which is the time frame before the 2022 to 2020. Both indexes almost delivered the same returns, but in the post-COVID phase, BSE S&P IPO index has delivered a 30%, 38% of higher returns. So here we can see that. Now understand that the factors that attribute this substantial growth of SMEs market in post-COVID phase. So the point is, the first is Indian government has implemented a range of supportive policy and initiative tailored specifically for SMEs, and these include simplified regulations, access to finance, tax incentives, dedicated platform for business development, and these measures have created an enabling environment for SMEs to thrive and fostering their growth. Second, the digital revolution has played a pivotal role in accelerating SMEs growth. So before the COVID, these companies actually targeting to their local areas only, but after COVID, they have actually start promoting, even the during time they have start promoting their products online, and that allows to
these SMEs companies to exist in a larger way and expand their business into the pan India and that tap into previously inaccessible markets. Third is the rise of the e-commerce market. So that also played a pivotal role for growth of SMEs. E-commerce platform has enabled SMEs to reach on a global customer base and scale their business rapidly. So now that we understand the reason behind the rapid growth of SMEs in the past 3 years, but it is equally important to access their trajectory for the upcoming 5 to 7 years. So ये तो अभी हमने देख लिया कि ये पिछले 3 साल में these index has delivered a phenomenal returns. But the point is, can these companies deliver the same type of return down the line next 5 to 7 years? The answer is yes. And we believe these are the major 5 reasons. Favorable government policies where we have seen where our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, now targeting a 10 trillion economy for our country, and the growing economy, rising domestic production, new opportunities in the digital economy, and the growth of the e-commerce market. These are the factors will support these SMEs companies to grow further in the down the line in the next 5 to 7 years. But the growth of the e-commerce market plays in a pivotal role. So as we have seen on the right side of the panel, there's a chart. This is the report which is released by the Morgan Stanley. So in this, we have seen the e-commerce market in India is growing rapidly and the SMEs are increasing using their platform to sell their products and services. So as per the Morgan Stanley's report, e-commerce market in India in 2014 was $14 billion. While in 2022, the e-commerce market in India was for $74.8 billion, and it is projected to touch to $200 billion by 2026 and $350 billion by 2030. And that number shows that the growth of the SMEs in the past 3 years has been just beginning, and the next 5 to 7 years, the growth is expected to listed through the SMEs companies only. And when this e-commerce platform business grow, the most and the major benefits will goes to these SMEs companies only. And that is the benefit which we are talking about. So when we see the market reach from 14 billion to $75 billion, we have seen this much of growth. And the same market now expected to grow by $350 billion by the end of 2030. So these are some SME exchange market stats. So the SMEs market, SME exchange comes into the limelight since 2012 only, and from now to till date, there's an 850 companies get listed by the mid of October 2023. So approximately 28% CAGR return these companies across all the 850 companies delivered, and 40% of these companies migrate to the main board, which shows the potential of these companies which come with a very low valuation, then move to the main board companies. So this is the potential of these SMEs companies. The point is, why investment SMEs and the micro cap companies? First is impressive historical performance. So as I've already discussed that BSE S&P IPO index has delivered 58% CAGR return in the last 10 years. When we compare with the main board IPO index has delivered only 20% return, and the Nifty 50 has delivered 11.3% CAGR return. So there's a 38% of alpha when we comparing these two indexes. This shows there's a huge potential in the SME indexes. Now, the next point is the foreign investor also start taking interest into the investing into the SMEs companies. So last 2 months, Morgan Stanley have invested in 3 Indian SME IPOs companies, Oriana Power, Chavda Infra, High Green Carbon. This indicate now the foreign investor also believing in the growth of the SMEs, and also believing when they're investing into this company, they made a huge amount and also get exited timely. Surging demand for IPOs. So nowadays we have seen a lot of retail participation in the SMEs IPOs. This SMEs IPOs oversubscribed by 100 times, 200 times, even 1000 times also. That indicates, so previously when this index delivered 58% return in last 10 years. So why this SMEs companies comes into limelight nowadays? Previously the concern was liquidity. Now this concern is over. When we're talking about the liquidity in 2018 and 19,
There's a total volume is about 50-60 crores on a daily basis across all the companies listed on the BSE SME and the NSE Emerge platform. Nowadays, it is 275 crores of volume on a daily basis, and we believe down the line, next 3 years, it will touch to 600 and 700 crores of daily volume. See, these are the indicators which indicate that previously, which was lacking, the investor get apply for an IPO, get the allotment, but they will not get the exit even on the listing date. So now this is what not the scene, because we have seen a lot of participation. We have seen not only from the retail client side, the QIBs also start investing into the SMEs IPOs. Foreign investors also start investing in, and these are the indicators. This segment is a next booming segment in India. Second, and next is migrating to the main board. So as I said, 40% of the companies which comes onto the SME platform migrate to the main board, which means they comes at a very low valuation when it get listed on the SME platform. And when they move to the main board as in small cap companies, the valuation already, when they come with an IPO in the SME, their market cap is around 100 crores and 200 crores. And when they get moved to the main board, their market cap increased to 100,000 crores or 2,000 crores. So this shows these SMEs providing a lower valuation opportunities to all such investors. And that's the reason this index has delivered this much of phenomenal returns. Liquidity, as I already said, liquidity is increased 500 times down over the period of next 5 years, where 5 years back, the total liquidity was 50 crores. Now it is 275 crores. Listing gains. So nowadays, those who are tracking the SMEs IPOs, they believe each and every week they have find one IPOs get old that get listed with more than 100% of returns. And this opportunity is only available with the SMEs IPOs, and we are the one who is offering this opportunity through our funds. Now the diverse investment opportunities, because see, if you're talking about the 20 years back, the investor basically start investing into the large cap. Over the period of time, there's a mid cap categories emerge, and then the investors have started but diversify their portfolio from large cap to the mid cap, and then they start investing into the small cap, because they start believing the segment is the growing segment and they are delivering more returns than the large cap. Similar way, now the SME is the next emerging segment in India who's delivering more return than the mid cap and the small cap. If you're talking about the last 5 years, mid cap and small cap approximately delivered 18% CAGR return on the higher side. But while when we're comparing with the SME platforms, SME is delivering more than 50% of returns. So for diversification of the portfolio, big investors always suggested at least diversify 10% of their portfolio into the SMEs investment, and it will allow them over the period of time a more return what they are actually expecting with the entire their investment set of portfolio. As I already said, potential for long-term returns, because when these companies come within a SMEs IPO and the 40% of the companies migrate to the main board, so the 200 crores of company, when they move to the main board, their market cap is around 1,000 crores or the 2,000 crores, which allow them on a long-term returns over the period of time. So this is the SMEs market liquidity charts. As I said, in 2018-19, in BSE, there's a volume is 10 crores only. Now it is 50 crores. When we compare with the BSE and NSE, both the exchanges, 50 crores of volume in 2018-19. Now it is 225 crores of volume. There's a surge of 484% in the growth, and it will remain continue the way the participation we receive from the retail clients, from the QIBs, and from the foreign investors. This market, which is 275 crores, will touch to 600 or 700 crores in 3 years of time. So these are the data which suggests, see, so you have seen Khan Packaging is the IPO which oversubscribed by 1,042 times. And if you see in the last of this list, the Goel Salt, which oversubscribed by 378 times. The point is, if an retail investors want to invest into the SMEs IPO, they won't get the allotment. Even the non-retail clients also. So because in the SMEs IPO, the minimum ticket size is 1.2 lakh rupees. I believe if the IPOs which get listed with 100% of gain in the on the listing day itself,
we believe, let's assume this IPO is oversubscribed by 200 times in the retail or the non-retail category. So which means if they applied for 200 applications, they will get an allot. There's a probability they get an allotment of one application. And the cost of 200 applications is 2.5 crores. So that 1.2 lakh rupees of profit, considering that IPO get listed with 100% of gain, so that 1.2 lakh rupees of profit not comes from the 1.2 lakh rupees of investment. It comes on the investment of 2.5 crores. And when you are computing this profit on your 2.5 crores of investment, then you find it you are actually not getting anything. So we provide the opportunity through both of our fund as a QIB or anchor investors, where this set of investors get an entire or fully benefit of this set of good SMEs IPOs. So this is the listing gains chart which we have mentioned in 2023. So Goel Salt is the IPO which gives a 258% of listing day gain on the listing day itself. Sun Garner is another IPO who's listed with 216% of gain. Basilic Fry Studio with 193% of gain. In this list, the last you have seen the Krishna Strapping Solutions, which get listed with 109% of gain, and these are the just few numbers only. I said now every week, those who are tracking the SMEs IPO, they find every week there's one IPO will get listed with more than 100% of gain. Even this week, also there's an IPO which is rocking deals, which get listed with 125% of gain on the listing day itself. So the point is, this SME invest can the only be a listing day gain only? The answer is no. So I have mentioned few of the performance that the entire 2023 SMEs IPOs which get listed, and now what is the performance they are offering? They are giving. So RBM Infracom is an IPO which get listed on 4th January, is currently delivering a 630% of returns. So imagine 630% of returns. You hardly find this setup of companies into the main board, but we find a lot of companies in SMEs which are offering this sort of returns. Where we have find another company, Remus Pharmaceutical, offering a 300 current gain is 373%. Goel Salt, which listed on 11th of October with 258% of gain, but the current gain is 363%. Again, it shows the IPO which got listed with 258% of gain on the listing day gives another 100% of return over the period of next 7 to 8 days of time. This is extraordinary. Yes, this is very extraordinary, and this is the realistic data. Everyone can check on the BSE SME platform or the many of the other website like Chittagong. The entire information is available on the public domain. The another IPO is Bond Data, which get listed with 193% of gain. Current gain is 259%. So these are the performance of the 2023 IPOs. Now, the most important point, what is the performance where the QIBs have invested? So I have mentioned this, made this slide. Say the total 71 IPOs in last 3 years, there's a 275 SME IPOs are coming. Out of this 275 IPOs, 71 companies invested by the QIBs. And when we check the performance of these companies, so what we have find out, 100% and above returns given by on the listing day, 100% above returns delivered. There's companies 16.9% of the companies delivering 100% and above returns. But when we hold these companies, at least for 2 years of time, this percentage of return increased from 16.9% to 47.89%. The point is, on the listing day, where QIBs have invested, delivering every fifth company delivering 100% and above returns. But while we hold this investment for 2 years of time, every second company start delivering 100% of return. And this is what the major advantage of SME investment. And it is not only the listing day game, it is a long-term investment also. And this reflect into through this, I'm trying to highlight through this slide. So as I said, the foreign investor also start investing into the SMEs IPOs in the last 2 months. Oriana Power, Chavda Infra, and High Green Carbon invested by the Morgan Stanley, which shows now the foreign investor also believing in the SMEs growth, and that's the reason they invested into these 3 companies, and it will be continue in the coming time also.
And not only the Morgan, I believe over the period of time, other foreign players also start investing into the SMEs companies. And that's the reason we believe this is the right time for Indian investors also to start investing and at least 10% of their entire portfolio diversify into the SMEs funds so that they will get in a huge profits and huge benefits. The point is, why choose step trade? So number one, we provide a diversified portfolio in SMEs and micro cap companies, because in getting an allotment into the SMEs, it's a difficult challenge and difficult task, and we provide this opportunity for our investors where we applied as an anchor investor and the QIBs. We have an experienced analyst teams. I have already 15 years of experience. Another fund manager, Kesha, is already into this. She's before launching this one, she's into their own managing their own family portfolio of about 60 crores into the SMEs companies, and where she has delivered a 40% of CAGR returns. Second, our promoters having a huge expertise into this SME segment. Mr. Jaimin Gupta, Mr. Kailash Gupta, who's into this SME, and they have already involved into 6-7 SMEs IPOs to get listed on the SME platforms. So we and our team have an entire idea which companies can get listed on the SMEs platform and which companies cannot be. We are providing a tactical allocation, especially in the category 3, where we not only invested for long term. If we believe we get in a short term opportunity and we made in a huge amount, we exited, and then we plan to reinvest in another companies also. We have a strong track record. As I said, the another fund manager, Kresha Gupta, she is managing their own family portfolio where she has delivered 30% CAGR return. And not only this, the Chanakya Opportunities Fund, which is our category 2 AIF fund, has delivered a 150% CAGR return in last 4 months. Our NAV reached from 10 to 14.82 in just 4 months of time. Transparent and ethical approach, because in category 1 and 2, normally the NAV release on a monthly basis. We are first in India who's offering a daily tentative NAV for all of our distributors and the investor on our website. They can log in and just check in which direction our NAV is moving up, moving on. And second, in which companies we have invested. The entire list we have mentioned, listed space of company, unlisted space of company, what is the cash balance in our bank account. Each and every information very transparently we provided on a daily basis on our portal. Live updates is there, so you don't need to check you don't need to wait for a monthly report. In our one cases, you can track on a daily basis. Second, as a customer centric focus, so we provide clients the best possible services from our end, and we always believe in we build a long-term relation with our investor, and we believe if we are providing very good services to them, they are not only associated with for long-termers, also referring a very good investors setup to our for our funds. Now comes to our fund Chanak, because we have currently 2 SMEs fund. One is category Chanakya Opportunities Fund, and the second is category 3 Step Trade Revolution Fund. So first I'll discuss with the Chanakya Opportunities Fund, because it is our company's first SMEs fund. So the strategy of this fund, we invest 51% of our fund into the unlisted space of companies, and these companies have a mandate with us to come with an IPO maximum 12-18 months of time. Next 24% of our fund we invested into the listed SMEs company, and mostly as a QIB or anchor investor into the upcoming SMEs IPOs. And the last 25% of our fund we invested into the small cap companies or the micro cap companies. And if we get an opportunity as an anchor investor in any of the micro cap companies, we invested into that also. So this is how our this Chanakya fund is constituted. Target portfolio for unlisted space, we target 2 to 10 CR of deal size in any of our unlisted companies. We are targeting 20 to 25 companies to invest. And we always be a minority stakeholder in any of our investee company, which means we cannot hold more than 49% of stake in any of our investee company through the Chanakya Opportunities Fund. So this is the fund feature of Chanakya Opportunities Fund. So it is in a category 2 closed-ended fund. The issue size is 100 crores with another green shoe option of 100 crores. The initial drawdown period is 12 months. Tenure is 5 years from the first close, and it is extended by 2 years with the consent of 2/3 of the investors. Minimum commitment amount is 1 crore rupees.
investor can give 100% upfront, or we have provide an option to give within 20 with 4 equal quarterly installment of 25% each, which means 25 lakh rupees quarterly installment for the 4 quarters. Our investment in SME sector through listed and unlisted companies into this, and the most important, our hurdle rate is 15% per annum pre-tax post expenses. So normally this is another key features of our category 2 AI fund, because when we comparing with other category 2 AI funds, so they are offering actually 10 to 12% of hurdle rate. We are very much confident in our strategy, and that's the reason we put 15% hurdle rate in our fund, which gives boost to our investor also, that we will charge a performance fee of 20% only when we deliver 15% and above returns. So this is our Chanakya fund performance. We launched our fund on for July 23. The current 31st October NAV is 17.4384. Currently it is 14.82. And that IRR was 376% on the 31st of October. Now it is 158% is the CAGR returns. Total commitment we have received till date 74 crores. Total contribution we have received till date 38.25 crores. And our AUM is around 54-55 crores, our total AUM. As I already said, in category 2 AIF, there's a monthly NAVs concept is there. So those investors who invested with us, because our September month NAV is 11.04. So those setup of investors who invested from 1st October to 10th of November, we provide all sorts of set of investor unit NAV on allotment at the price of 11.04 only. And that's the reason also that this month NAV is coming down to this. Second, the major investment we did in the Plaza Buyers, which we applied at 54 price, get listed at with 48% of gain at the price of 80, and in just 20 days of time it was to 173. And when our first 50 days of 50% of lock-in has over, the price was 180, and we booked 58% of the profit. So this is our second fund, Stepper Revolution Fund. So because it is a category fund, we invested entire fund into the listed space only. And in this fund, we are targeting to invest 40% of our fund as an anchor investor, where we have an opportunity to get 100% allotment. And the 60% of our fund we invested into the invested as a QIB investor into the SMEs and the micro cap companies. So now comes what is the difference between the anchor investor and the QIB. So whenever the IPOs are coming, so there's a 4 category: retail, non-retail, QIB, and the anchor investor. For retail and non-retail, there's a proportionate, there's a pro rata allotment is there. As I said, if you applied for a 2.5 crores of application, in that scenario also there's no probability that you will get an allotment. But for a QIB scenario, we will get in a proportionate allotment and the confirm allotment. Let's assume in an IPO that oversubscribed 200 times into the non-retail segment, it is oversubscribed by 80 times into the QIB segment. And if applied for a 10 crores of application, that is for sure will get an allotment of 12.5 lakh rupees. And as an anchor investor, it's a complete relation between us and the merchant banker. And if merchant banker accept our anchor investor applications, we will get 100% of allotment. So in past, we have done total 5 anchor investment, which out of this 3 already get listed. Plaza Wire, we have invested as in a micro cap IPOs, and the another one, 2 SMEs IPO we have done. One is Transsteel, which get listed at 33% of gain. Current gain is around 40 odd% of returns. Another investment we done into the SAR Televentures, where we applied for 2 crores of applications. And currently that investment also it get listed with 99.5% of return, and currently delivering more than 300% of returns in less than 30 days of time. So this is what the opportunities we are offering. And see, if we are getting only 15 or 20 companies in the entire year, we are very much sure will deliver very good returns. What the BSE SME IPO index has delivered, even more than that also we can deliver that. Yeah. Okay. Thank you, Ankush. It was a great presentation. Lot of insights. I mean, I was not only surprised, I was shocked
Even I also the like right to word. add, if you allow me, I will also like to share one more very insightful information to your दिखाइए ना, yes. investors, and they will delight to know. Hold a minute. And I also want to read Jaimin's mind that, what difficulties he faces while, dealing with these companies, and what are the things that one has to keep it in mind while selecting these companies. So normally it was the phenomena when an index delivered a higher returns, their beta has always been a higher side, correct? Right. So this is the NSE's fact sheet. NSE updated on their Nifty indices.com website on a monthly basis. So this is their October month fact sheets, where currently there's 166 company get listed into this index. So you have seen the last 1 years, these companies have delivered 69% of return. In 5 years, these companies have delivered 48% of returns. Correct? This is So the average you are talking about, the yes, benchmark. yes. Average return of these all 166 companies which get listed on which is the part of NSE Emerge Index. So how many total companies are there now in the SME platform? So as I said now, so across BSC and NSE, approximately 400 companies right now into the SMEs platform, and the 40% already got moved to the main boards. Main boards. So 166 companies are currently the part of NSE Emerge Index by the end of 31st October, and you have seen. So this index has delivered 69% returns in 1 year, 48% return in 5 years. But the most important, when you check the beta compared with the Nifty 50, the beta of this index is 0.44 in last 1 year, and since inception is 0.28 only. So this allow your investors not only this only offer in a good returns, but also with lesser risk. Understood. Okay, all right. So yeah, can you close this? Yeah. So अंकुश ये बताइए कि कितनी कंपनी इसमें फेल हुई हैं, इन द सेंस दैट they got higher valuation. आपने कुछ ऐसा एनालिसिस किया? Yes. The slide which I have mentioned where the QIBs have invested. So you have found 12% of the companies delivering less than 0% of return. So over the period of time where the QIBs have invested. See, my point is, see, in last 3 years, 275 companies get listed. Even up September months में बात करेंगे, there's 36 SMEs IPOs are coming. So we are not going to plan to invest in each and every companies. So my point is to safeguard my investors first, and for this we have one investment thesis, and based on that only we have finalized the companies and invested into this. The first criteria which I have suggested to each and every investors, targeting only those companies where QIBs have invested, because which ensure you the liquidity will be there in such set of companies, not only now, even after certain period of time as well, even after a year or 2 years of time. So when we analyze this 71 of companies, so 12% of the companies, even after 2 years of time, delivering on negative returns. Understood. Yeah, Jaimin, can you talk now and see if that is working? Now you're audible. So fine. So basically क्या होता है, जब भी हम लोग कंपनीज को शॉर्टलिस्ट, यूजुअली क्या है, एसएमई पे 150-200 कंपनीज के आईपीओ आते हैं. सो अंकुश ने जैसे बोला, वी आर नॉट इन एनी हरी कि हमको फटाफट कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है. वी आर सफिशिएंट टाइम. हमको 15-20 अच्छी कंपनियां शॉर्टलिस्ट करनी है, ये 150-200 में से. कोई भी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने से पहले सबसे पहला प्रोसेस होता है उसकी हिस्ट्री और उसका विंटेज देखना. कितनी पुरानी कंपनी है, कितने टाइम से बिजनेस में है, प्रमोटर्स का कितना कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर, कितना होल्ड है, एंड मोरली बिजनेस पे कितनी पकड़ है. जो हम रॉ लैंग्वेज में बात करते हैं कि प्रमोटर्स को धंधे में पकड़ कितनी है. सो वो एक चीज वैलिडेट होती है उसके विंटेज से. कंपनी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में 10 साल से है, एक ही सेक्टर, उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है वो 10 ईयर से कंसिस्टेंटली रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन दे रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, कैश फ्लोस पॉजिटिव है. तो ये फर्स्ट फैक्टर होता है जहां पे हम वेरीफाई करते हैं कि प्रमोटर की धंधे में पकड़ है. फिर सेकंड फैक्टर आता है बिजनेस की वायबिलिटी कितनी है इन नियर फ्यूचर. सो सपोज जो बिजनेस में है प्रमोटर, जैसे अगर प्रमोटर सोलर के बिजनेस में है तो सोलर इज अ ग्रोइंग बिजनेस, तो वी नो दैट मार्केट इज ग्रोइंग, देयर इज अ गुड फ्यूचर टू दैट मार्केट. तो सेकेंड थिंग आती है कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेना, उस बिजनेस की वॉलेटिलिटी को अंडरस्टैंड करना, वो बिजनेस का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, ये सारी चीजों को स्टडी करना. थर्ड थिंग आता है फंडामेंटल्स, जो है कैश फ्लोज, रेवेन्यू ग्रोथ रेट, इबिटा पॉजिटिव,
So we have a policy that we don't invest in startups who are making loss. We invest strictly in cash flow positive or PAT positive companies. So ये 3-4 एक बेसिक पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप कंपनी को पहले शॉर्टलिस्ट करते हो कि हाँ कंपनी इन्वेस्टेबल है, बिकॉज उसका फ्यूचर है, प्रमोटर्स को धंधा समझ में आता है, विंटेज है, कंसिस्टेंटली 7-8 साल से धंधा कर रहे हैं, एक फ्यूचर है, कंपनी की बुक्स भी अच्छी है. सो एक ये फर्स्ट पॉइंट होता है जहां पे हम एक क्लैरिफिकेशन लेते हैं या एक समझते हैं. फिर सेकेंड थिंग इज मैनेजमेंट कॉल. जो मैनेजमेंट कॉल होता है उसमें क्लैरिटी आती है कंपनी के प्रमोटर्स का विजन क्या है, वो एडमिन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस इज जब तक मार्केट अच्छा चल रहा है, जब तक अच्छा है, तब तक हर धंधा अच्छा होता है. प्रमोटर का लुकआउट तब देखना होता है जब बिजनेस में तकलीफ आती है, तो वो उसको कैसे संभालता है. सो फर्स्ट थिंग इज ग्रोथ कम होगा चलेगा, बट पैसे की सेफ्टी होना इज मोर नेसेसरी. सो प्रमोटर सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करता है, उसकी टीम का प्रमोटर को लेके आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट को लेके आउटलुक क्या है, दिस ऑल ऑफ द स्टडीज आर डन इन, मतलब बहुत डीपली ये सब चीजों को स्टडी किया जाता है. फिर उसके बाद थर्ड थिंग होती है मार्केट सेंटीमेंट ऑफ दैट कंपनी. सो 3 फैक्टर्स प्ले अ रोल. द फर्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फंडामेंटल्स, विंटेज एंड एवरीथिंग. Second is promoters vision, promoters contribution to the company, employees mindset about the promoters, their admin control. Then third thing is the market sentiment about that company. हर कंपनी को चलाने के लिए उसका मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होना जरूरी है. आपका सप्लायर आपके बारे में अच्छा बोलना चाहिए, आपका कस्टमर आपके बारे में अच्छा बोलना चाहिए. सो ये जो थर्ड फैक्टर होता है वो सेंटिमेंटल फैक्टर होता है, हम उसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं. कंपनी बहुत अच्छा कर रही है लेकिन कंपनी के सप्लायर्स आर थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल्स, या कंपनी के सप्लायर्स आर सेइंग कि यार हम लोग बहुत टाइट पोजीशंस में काम कर रहे हैं, शायद हम फ्यूचर में काम ना कर पाए. तो वो एक चीज को समझना बहुत जरूरी होता है कि वो सेंटीमेंट क्या चल रहा है कंपनी का मार्केट में. मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, क्यूआईबीज या इवन कंपनी के एम्प्लॉइज कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, उनका सेंटीमेंट कैसा है कंपनी का, हाउ मच दे आर इमोशनली अटैच्ड टू द कंपनी. तो ये थर्ड फैक्टर होता है सेंटीमेंट. हम ये तीनों फैक्टर्स को एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट कॉल लेते हैं. अब ये तीनों फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर पे अगर कंपनी पास नहीं करती है तो वी जस्ट कट दैट कम. नहीं, वो ठीक है, ठीक बात आपने बोला. वो फंडामेंटली आपके जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा आपने बताया कि भाई मेनली आप प्रमोटर का थॉट प्रोसेस समझते हैं, बिकॉज वो एसएमई है, अभी वो बड़ी हो रही है, होने वाली है, तो समझ में बिल्कुल आ जाता है कि पीछे क्या है. मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस में फ्रॉड आ जाता है, इन द सेंस बिल्कुल when they enter a lot of QIB participation, people like you, and then people, there are retail investors who come together and suddenly it explodes like the what is happening to. इस सिचुएशन से आप कैसे डील करते हैं ओवर वैल्यूएशन जब होता है? सी ओवर वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आना गलत नहीं है जब आपको रेगुलेटरी नॉर्म्स अप्रूव करते हैं. ठीक है, मतलब इट इज अ फैक्ट. मतलब वो एक जब कंपनी ओवर वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आती है, सपोज उसकी 100 करोड़ की वैल्यू होनी चाहिए, वो 150 करोड़ की 150 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आया. अब उसको रेगुलेटरीज भी सब अप्रूव करते हैं, तो यानी वो कहीं पे गलत नहीं है. हमको ये समझना होता है कि वो वैल्यूएशन पे वो सस्टेन कर पाएगा. अगर सपोज कोई कंपनी है, जैसे अभी की अगर हम एग्जांपल है तो रॉकिंग डील्स करके एक कंपनी का आईपीओ आया है, जो हमको वी गॉट एन एंकर अपॉर्चुनिटी इन दैट कंपनी, बट वी डिडंट टेक दैट एंकर बिकॉज हमको वो कंपनी ओवर वैल्यूड लगी. लेकिन वी हैव टू टेक दिस फैक्ट के शेयर मार्केट या हम इक्विटी मार्केट्स की जब हम बात करते हैं तो वो जितना फंडामेंट्स रोल प्ले करते हैं उतना ही डिमांड एंड सप्लाई और सेंटीमेंट्स रोल प्ले करते हैं. अगर कोई कंपनी की डिमांड ज्यादा है तो वो ओवर वैल्यूएशन में जाएगी ही जाएगी, चाहे कंपनी के फिगर्स थोड़े नॉमिनल है. अब ओवर वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना नहीं करना इज कंप्लीटली एन इन्वेस्टर्स कॉल. सो हमारा हमारा हम लोग जो इन्वेस्टमेंट थीसिस पे काम करते हैं उसमें हमारे इन्वेस्ट वैल्यूएशन के लिए कुछ नॉर्म्स है कि हम 12 के पी पे इन्वेस्ट करते हैं, कैश फ्लो के हिसाब से एक वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालते हैं, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से एक वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालते हैं, हम उसके बेस पे कॉल लेते हैं. अब जो कंपनीज ओवर वैल्यू हमको लगती है वी अवॉइड दैट कंपनी. इट इज वेरी सिंपल. 200 कंपनी के आईपीओ आते हैं, उसमें से 20-30 कंपनियां ओवर वैल्यूएशन पे आएगी. जब लॉस में भी कंपनी के आईपीओ आ सकते हैं तो ओवर वैल्यूएशन पे आना कोई बड़ी बात नहीं है. हमको समझना है कि वो कंपनी वो वैल्यूएशन पे सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. उसने प्राइमरी मार्केट में तो 100 की जगह 150 करोड़ पे फंड रेज कर लिया, सेकेंडरी मार्केट में 150 करोड़ की वैल्यूएशन पे वो कंपनी की डिमांड है या नहीं. लिस्टिंग होने के बाद 100 रुपीज पे कोई कंपनी का आईपीओ आया है तो 100 रुपीज पे लोगों ने तो भर दिया, रिटेल भर गया, क्यूआईबी भर गया.
बट सेकेंडरी मार्केट में वो 100 रुपीज पे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, वरना फिर वो टूट के 70 रुपीज आ जाएगा प्राइमरी के बाद। ठीक है, ठीक है। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे रैपिड फायर आपको मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। या ये बताइए कि जैसे अब देखा आपने 750% रिटर्न आया, 800% रिटर्न आया, अब क्या करते हैं आप? ये टचेबल है बिकॉज उतनी अर्निंग्स तो नहीं बढ़ी होगी 750% की बिल्कुल एब्सोल्यूट अर्निंग्स, बट sometimes stocks are ahead, sometimes earnings are ahead. Now this time stocks are really ahead, of much बिल्कुल। more ahead than anything else. So how do you handle that situation अगर कोई स्टॉक है तो 350% बढ़ गया है? बेसिकली क्या है, अगर कोई भी स्टॉक 300 350% बढ़ गया है, सपोज अगर हम बात करें, हमको ये देखना है कि कंपनी वो 6 8 महीने में, साल भर में वो रिटर्न देगी कि वो 300% के ग्रोथ पे सस्टेन कर जाएगा। सपोज इफ आई से अभी 10 करोड़ का प्रॉफिट है और कंपनी का 100 करोड़ का मार्केट कैप है, सो इट इज अ 10 का पी। नाउ वो 100 करोड़ का मार्केट कैप हो गया 200 CR का, सो द कंपनी हैज कम टू अ 20 पी। तो वी हैव टू सी कि नेक्स्ट ईयर तक में क्या ये 20 CR का पैट दे रहा है क्या इसके प्रोजेक्शंस में। अगर वो दे रहा है तो वो वापस उसके सही वैल्यूएशन पे आ जाएगा एक साल बाद। तो हमारा कॉल बहुत सिंपल होता है कि जो जो प्राइस पे हम एंट्री ले रहे हैं, अगर वो प्राइस पे वो 6 महीने बाद या 8 महीने बाद भी प्राइस को वैलिडेट कर देगा, उसके नंबर्स वैलिडेट कर देंगे, तो इट माइट बी अ गुड एंट्री पॉइंट। क्योंकि 6 महीने बाद शायद वो स्टॉक अवेलेबल ना हो या थोड़ा और बढ़ जाए। ओके। सो ये चीज होना, दिस इज अ डिमांड सप्लाई गेम, तो ये चीज होना कि फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन के ऊपर उसका आज डिमांड बढ़ गया। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके। अच्छा, जिसमें जो कंपनियां मेन बोर्ड में माइग्रेट हुई हैं, तो बिकॉज आप 6 7 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल। कंपनी माइग्रेट हुई, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? उन कंपनियों को इससे फायदा हुआ और उन्होंने स्केल करके कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया आपके पोर्टफोलियो पे? सर देखो, इन्वेस्टर का पैसा बनता है जब कंपनी मेन बोर्ड पे माइग्रेट होती है। क्योंकि इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, जब कंपनी मेन बोर्ड पे माइग्रेट हो रही है तो उसने कंसिस्टेंटली 2 साल कुछ अच्छे नंबर्स दिए होंगे, कंप्लायंस प्रॉपर्ली फॉलो किए होंगे, और कंपनी एक अच्छे स्टेज पे होगी तभी मेन बोर्ड पे माइग्रेट हो पा रही है, क्योंकि उसको रेगुलेटरी अप्रूवल भी लगता है। सो एक पॉजिटिव पॉइंट आपके पास ऑलरेडी होता है कि कंपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, तभी वो माइग्रेट हो रही है। अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन को ट्रस्ट करके हम फर्दर हमारा बेट इंक्रीज करते हैं। यूजुअली केस में व्हेन वी सी के कंपनी 3 महीने 6 महीने में माइग्रेट हो, तो हम हमारी बेट साइज को इंक्रीज करते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट साइज को इंक्रीज कर देते हैं। बिकॉज वी नो, उसके दो रीजन है सर। एक, रिटेल में मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख एसएमई पे, और मेन बोर्ड पे दर इज नो कैप, आप 100 रुपए के भी शेयर खरीद सकते हो। तो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ सकता है मेन बोर्ड पे आने के बाद। सो देयर इज अ हाई चांस ऑफ प्राइस इंक्रीज, डिमांड बढ़ेगा क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स की एंट्री होगी। तो यूजुअली हमारे केसेस में हमने जितने भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए जहां पे हमने एसएमई स्टेज पे इन्वेस्टमेंट किया और मेन बोर्ड में हमने एग्जिट ली, दैट हैव बीन अ वेरी गुड एंड फ्रूटफुल रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल आई टेल यू वन कंपनी, हाईटेक पाइप्स। वी एंटर्ड एट द एसएमई स्टेज 3 years back, we exited on the main board and we got a good return, very good return. ओके, ओके। अभी इसमें बताइए कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है जैमिन जी, आगे चल के अभी कितना बड़ा हो जाएगा एसएमई प्लेटफॉर्म? टोटल मार्केट कैप कितना होगा पुट टुगेदर ऑल द कंपनीज? और आगे चल के आपको क्या लगता है 5 साल 10 साल में इसका फ्यूचर? सर जैसे इंडिया में जितनी लार्ज कैप कंपनीज है उसकी शायद 100 टाइम्स कंपनीज होगी मिड कैप, और उसकी 100 टाइम्स कंपनीज होगी एसएमई स्मॉल कैप। सो आप एक हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया में लाखों के वॉल्यूम्स में एसएमई कंपनीज है। अब उनके लिए एसएमई एक्सचेंज इज अ वेरी गुड पोटेंशियल टू रेज फंड्स। आप 20 करोड़ 30 करोड़ के जो फंड रेजेस होते हैं एसएमई पे, वो सबसे बड़ा पोटेंशियल है। तो व्हाट आई सी इज के एसएमई एक्सचेंज इन नियर फ्यूचर, मतलब नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेटर देन 3 years और 4 years, इट वुड बी इक्वली ट्रीटेड एज अ मेन बोर्ड एक्सचेंज। उतनी कंपनीज लिस्ट हो चुकी होगी, उतनी वॉलिटिलिटी आ चुकी होगी, उतने ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ चुके होंगे। हम पास्ट के जजमेंट्स पे ये कॉल ले सकते हैं, लास्ट 2 years में जो डेली डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो 3 times हो चुका है। अगर वो 3 times की ग्रोथ रेट पे रहा तो ये मैक्सिमम 4 5 years के अंदर मेन बोर्ड के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के आसपास आ जाएगा। Yeah, there is a saying that investor, I mean, the money chase valuations, and if they हाँ really बिल्कुल match बिल्कुल बिल्कुल valuations, बिल्कुल। obviously we'll see a lot of migration. एंड सर हम डिमांड के बेस पे ये चीज का आइडिया ले सकते हैं कि मतलब एफ आई आईज, एफ पी आईज, एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन एसएमई एक्सचेंज। देयर इज ओनली वन स्ट्रक्चर, क्यू आई बी म्यूचुअल फंड्स हु आर स्टिल रिस्ट्रिक्टेड टू इन्वेस्ट इन एसएमई। इफ दैट ओपन्स तो बहुत बड़ा लिक्विडिटी एसएमई को मिल जाएगा। राइट। सो अभी मेनली नॉन प्रोमोटर नॉन इंस्टीट्यूशनल मनी है अभी तक एसएमई में, देखा जाए तो, मतलब
इंस्टीट्यूशनल मनी है ना सर, अभी हमने देखा जो आईपीओ आज सर 2 आईपीओ क्लोज हुए, डी कैमेक्स एंड एआईएमसी करके है। दोनों कंपनी में क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन इज 90 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 2000-3000 करोड़ का क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन आया है। सो इंस्टीट्यूशनल प्ले इज वेरी हाई. It is increasing since last 6 months. Previously, I would say high institutional. It was completely non-institutional play, but in today's market, institutions have more faith in SME than retail. ओके क्योंकि एक कंपनी जो लार्ज कैप पे जाती है या मिड कैप पे जाती है मेन बोर्ड में, उसको एक 15-20 साल की जर्नी लगती है फ्रॉम स्टार्ट टू मिड कैप तक पहुंचने में। कोई भी कंपनी को 50,000 करोड़ के मार्केट कैप में पहुंचने में, स्टार्ट टू 50,000 करोड़ का जो फेज होता है, 0 to 50,000 करोड़ के मार्केट कैप में एक 20-25 साल की जर्नी लगती है। अब एसएमई एक्सचेंज पे क्यूआईबी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो कंपनी 50,000 करोड़ के मार्केट कैप तक पहुंच सकती है, वो कंपनियों में 100-200 करोड़ की मार्केट कैप पे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी। ओके अच्छा, इसमें ये बताइए कि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है पास्ट में कि जब when the sentiments are good, not good, especially for example post COVID 2021, we saw a lot of bloodbath on the SME exchange in terms of valuations going down crazily. So what is your sense, कैसे ये valuation suddenly बढ़ता लेकिन फिर उतनी तेजी से गिरता भी है, स्पेशली 2021 जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं। वो सर, जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगा कोई भी मार्केट में, डिमांड बढ़ेगी और वैल्यूएशंस बढ़ेगी। लिक्विडिटी कम होगी, डिमांड कम होगी और वैल्यूएशंस घटेगी। दिस इज जनरल मार्केट प्रैक्टिस। ये चीज तो मार्केट के अंदर होनी है। हमारा काम ही वो है कि उसको एनालाइज करना और उस सिचुएशन को अवॉइड करना। So basically, why do investors prefer a research analyst or an investment advisor to analyze this situation? अब ये सिचुएशन को हम नहीं रोक सकते बिकॉज दिस इज अ मार्केट थिंग, ये तो होना ही है। इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर है, तो इन्फ्लेशन रोकने के लिए या उसको आउट पावर करने के लिए वी टारगेट कि हमारा अर्निंग्स इन्फ्लेशन से ऊपर रहे, बट वी कैन नॉट से ना कि हम इन्फ्लेशन रोक पाए, वो तो नहीं रुकने वाला है। सो सिमिलरली ये मार्केट की टेंडेंसी है कि डिमांड हो तो वैल्यूएशंस बढ़ना, डिमांड कम हो तो वैल्यूएशंस को घटना। तो वो मार्केट तो अपने हिसाब से परफॉर्म करने ही वाला है, वो ब्लड बाथ दे भी सकता है। इट इज मतलब वो मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक है। हमारा काम होता है इस चीज को समझना कि कौन सी कंपनीज अवॉइड करना, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, कि ब्लड बात हो तो हम उससे हैम्पर ना हो। अभी FIIs का इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं हुआ ना एसएमई प्लेटफॉर्म पे? नो सर, देयर इज मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टेड, FIIs आर इन्वेस्टिंग नाउ, यस। अच्छा, दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट। बिल्कुल, मॉर्गन स्टैनली ने इन्वेस्ट किया था सर अभी एसएमई एक्सचेंज की 3 लिस्टेड कंपनीज में, एंड दे इन्वेस्टेड एज एन एंकर इन्वेस्टर। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई कंपनी 60-70% बढ़ गई और कैट 2 में आपके पास है, तो आप उसमें ये भी हो सकता है कि आप प्रॉफिट बुक कर दें वहां पे और फिर दूसरी कंपनी ले, बिकॉज ऐसा भी ना होना कि जब मेच्योरिटी का टाइम है, बिकॉज आपकी कैट 2 में लॉक इन है, तो मेच्योरिटी के टाइम पे अगर सपोज खुदा ना खास्ता अगर समय खराब चल रहा हो, तो उस समय पे हो सकता है कि 10 रुपए कहने में 20 रुपए हो और 20 रुपए वापस आके 15 रुपए हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करेंगे? सर मतलब ये ऐसा होता ही है, हम लोग रिटर्न्स बुक करते ही रहते हैं। आज से हम जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं एज एन एंकर इन्वेस्टर, सो हमारा 50% लॉक इन 30 डेज में खत्म हो जाता है। सो मैक्सिमम 30 to 35 डेज के अंदर हम लोग स्टॉक को सेल कर देते हैं। मतलब वी डोंट होल्ड द स्टॉक। जो कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट ही ये सोच के किया है कि इसमें हमको 2 साल खड़े रहना है, 3 साल इन्वेस्टेड रहना है, वो कंपनी में वी डोंट लुक एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू। बट वेर आवर इन्वेस्टमेंट थीसिस आर क्लियर कि हमको सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना है, आर्बिट्रेज करना है, या लिस्टिंग पे एग्जिट ले लेनी है, या बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें जैसे हमारा एक खुलता है हम एग्जिट ले लेते हैं। मैं बहुत शॉर्ट एग्जांपल दूंगा, प्लाजा वायर्स लिमिटेड, वन ऑफ द कंपनीज, वी इन्वेस्टेड 10 crores एज एन एंकर इन्वेस्टर फ्रॉम चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड। Our 50% lock-in ended on 9th November. We took an exit of over 50% on the same day itself. Okay, one So, disclaimer here for the audience that whatever names that we are taking of the company is for the example purpose and the whole video is for education purpose. So please do not invest in these companies before you talk to your investor बिल्कुल because सर। investing involves risk. The other thing is, जेमी जी आप ये बताइए, इसमें कुछ मिथ है इसको लेके। देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव परसेप्शन अराउंड अमंग्स द इन्वेस्टर कम्युनिटी कि इसमें बहुत सेटिंग होती है, इसमें लिस्टिंग करने के पहले गेम मैच फिक्स हो जाता है, फिर इसमें लिस्ट करने के बाद में जो इन्वेस्ट प्रमोटर अपना पैसा लेके भाग जाता है और बाद में फिर वो वैल्यूएशन जीरो डाउन हो जाता है। तो पहले आप बताइए कि इसको आप अगर आप इसको क्वांटिफाई कर सके कुछ नंबर में, इतने % कंपनी ने ऐसा हुआ है,
या आप इससे अग्री करते या डिसएग्री करते? ओवर टू यू। मैं एग्री करूंगा सर, डिसएग्री नहीं करूंगा। ठीक है, मार्केट है, मतलब पुलिस है तो चोर भी होगी, ऐसी बात है। तो वो तो दोनों को साथ में ही रोल प्ले करना है। ठीक है। सो वो मार्केट के अंदर रहेगा। हमारा काम होता है उस चीज को एनालिसिस करना कि कौन सी कंपनीज इसमें थी। यूजुअली व्हाट वी से इज नॉट मोर देन 20% कंपनीज हैव दिस काइंड ऑफ आउटपुट, कि जहाँ पे वैल्यूएशन कम होने के चांसेस रहते हैं। सो 80% कंपनीज कम विद अ वेरी गुड इंटेंट एंड गुड माइंडसेट, जिनकी बुक्स क्लीन होती है एंड आर प्रॉपरली रनिंग। 20% कंपनीज ही ऐसी होती है, बट अब जो सेबी के रेगुलेटरी नॉर्म्स हो गए, वो इतने स्ट्रिक्ट हो गए, बीएससी के हो गए, कि अभी ऐसी भी ये भी शायद मेरे ख्याल से अगले 1 साल के अंदर 10% भी तो चला जाएगा। एंड जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, उनके ड्यू डिलिजेंस पे आपको ज्यादा रिलाई करना होता है, बिकॉज आप सिर्फ एक ही इंटरमीडिएटरी एजेंसी के ड्यू डिलिजेंस पे आपका इन्वेस्टमेंट कॉल ले रहे हो, क्योंकि बुक्स को फाइनली डीडी तो मर्चेंट बैंकर ने ही किया है और किसी ने किया नहीं है। सो मर्चेंट बैंकर की रिलायबिलिटी भी आपको देखनी होती है कि मर्चेंट बैंकर के पास्ट एक्सपीरियंसेस आईपीओस का क्या सिचुएशन रहा है। अगर उसके पिछले 2-3 आईपीओस के अंदर लिस्टिंग नेगेटिव हुई है या वह बाद में वैल्यूएशन गिर गई है, तो यू शुड अवॉइड दैट मर्चेंट बैंकर। इट इज वेरी सिंपल। तो इसमें मर्चेंट बैंकर का भी बोलते बहुत रोल होता है आजकल। ऐसे भी आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट पेंटिंग द होल इंटायर वॉल विद द सेम ब्रश, बट विद द डिस्क्लेमर हियर इज अ सेइंग दैट मर्चेंट बैंकर के पास जाओ आप और वो बोलता है आपको, अच्छा मैं इन्वेस्टर लाके देता हूँ इतना करोड़ पे इतने करोड़ पे, और वैल्यूएशन भी स्ट्रेच करा देता है और पूरा गेम वहां हो जाता है। तो मतलब आपको लगता है ये ऐसा होता है, या ये दीज आर जस्ट परसेप्शन अबाउट द मार्केट्स? नहीं सर, दिस मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ, मर्चेंट बैंकर के हाथ में कुछ नहीं होता है। उसका काम होता है डिलिजेंस करना, कंपनी को सबमिट करना, बीआरएचपी सबमिट करना। वो ये चीज का कॉल नहीं ले सकता कि अप्रूवल आ जाएगा या नहीं आएगा। हाँ, कंपनी में कुछ मैनिपुलेशन हो सकती है जो मर्चेंट बैंकर करवाता हो प्रमोटर के पास से, या कोई भी चीज हो सकती है। बट उसके लिए बहुत सिंपल फंडा है। आप मर्चेंट बैंकर ही को ही अवॉइड करो ना। इंडिया के अंदर 25 से 30 मर्चेंट बैंकर्स है, उसमें से शायद 4-5 मर्चेंट बैंकर्स ऐसे हैं जो ऐसी कोई प्रैक्टिस करते होंगे। तो अब हम उसको अवॉइड करते हैं। हमारे वी हैव अ लिस्ट ऑफ मर्चेंट बैंकर्स whom वी कंप्लीटली अवॉइड, कि उनका कोई भी आईपीओ कितनी भी अच्छी वैल्यूएशन पे हो, वी डोंट इवन लुक एट द कंपनी। सो बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट दैट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ओनली। एक जो डीडी की प्रोसेस होती है उसी को हम ट्रस्ट नहीं करते। तो मार्केट के अंदर ये चीज के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि किस लेवल तक होता होगा, बट हाँ, होता भी होगा तो वी कंप्लीटली अवॉइड इट। और ये जो 25-30 मर्चेंट बैंकर्स आपने बताया, सो ब्रॉडली जो मार्केट में जो लिस्टिंग होती है यहाँ प्लेटफॉर्म पे, ये सिर्फ 25-30 ये मर्चेंट बैंकर के थ्रू ही होती है? दैट्स करेक्ट, राइट? मैक्सिमम मतलब आई विल से 80%, 90% आईपीओज आर विद दिस 25-30 मर्चेंट बैंकर्स। द रेस्ट 10 आईपीओज के अंदर दूसरे 75% मर्चेंट बैंकर्स। And then over and above, you also have your own due diligence process through which you बिल्कुल, evaluate companies, बिल्कुल, वी हैव अवर ओन ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। right? उसको मतलब मर्चेंट बैंकर जो होता है वो एक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के बेस पे डीआरएचपी बनाता है। फिर वो डीआरएचपी को एनालिस करना, मतलब क्या फिगर्स को कैसे समझना, उसको कैसे जस्टिफिकेशन में लेना, दैट इज अवर। राइट। इसमें जैमिन जी और भी है, जैसे मेन बोर्ड की कंपनीज में काफी प्लेयर्स हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज है, लाइक शेर खान, मोतीलाल, दे कवर अप, बिल्कुल। कम आउट विद इक्विटी रिसर्च आइडिया। एसएमईज में भी इस तरह की कुछ अभी तक आपने इन्वॉल्वमेंट देखा जिसमें कोई ब्रोकर इसे कवर करके अपने इक्विटी आइडियाज दे रहा हो? नहीं, बट अभी हम लोगों ने रिसेंटली बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट को कमेंट करते हुए देखा हुआ है एसएमई की कंपनीज के ऊपर एंड प्रोवाइड अ रिपोर्ट। बिकॉज जिस हिसाब से उनको सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो एवरीवन एक अट्रैक्शन, इट अट्रैक्ट्स अ वेरी हाई number of investment advisors. So we have seen them giving advice on SME exchange and SME companies. But जो बड़े brokers है, जिस मोतीलाल और say, I've never seen a report in recent times on any of the SME company. And my sense is the way it is shaping up 2 years, 3 years down the line, eventually they will start covering this up because बिल्कुल, 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 बिल्कुल सर। आई वुड से मैं 2-3 साल की भी बात नहीं करूंगा, 1-1.5 साल में ही करना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है। अब मार्केट अगर वहां पे ड्राइव हो रहा है तो करना ही पड़ेगा। मतलब ऑप्शंस है, कॉल पुट है। इट वाज नॉट अ बिग प्ले, कॉल पुट वाज नॉट अ बिग प्ले 10 years बैक, टुडे इट इज वेरी बिग प्ले। सो जहाँ पे मार्केट घूमेगा वहां पे सब लोगों को, सारी इंटरमीडिएटरीज को आना तो पड़ेगा। तो जैसे हम देख रहे हैं मॉर्गन स्टैनली, क्यूआईबी, इतने सारे सब लोग अभी पैसा लगा रहे हैं एसएमई की कंपनीज में। सिमिलरली जो दूसरे इंटरमीडिएटरीज है, ब्रोकर्स है, रजिस्ट्रार्स है, एडवाइजर्स है, वो सब भी अपना अट्रैक्शन लेके आएंगे। राइट। नहीं, मेरा जो इसमें देखना है कि विद दिस मनी कमिंग इन,
ये एसएमईज कितना एक्सपैंड कर सकती हैं, एंड रियली इंडिया में जो भी नेक्स्ट लेवल का जो ग्रोथ आ रहा है, दैट विल कम फ्रॉम दिस एरिया। मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में सर समझा सकता हूँ। कोई भी एक कंपनी, सपोज जिसका 50 करोड़ रुपए का आईपीओ आया है, उसको 100 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है, यानी 5,000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन मिला कंपनी को। अब वो कंपनी, टोटल एसएमई का जो फंड रेज होता है पूरे साल भर में, वो 200-250 कंपनी का होता है, विद एवरेज टिकट साइज ऑफ 30 करोड़। सो पूरे साल भर में एक मतलब एसएमई एक्सचेंज 5 से 6 हजार करोड़ का फंड रेज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब क्यूआईबी का जो सब्सक्रिप्शन आता है वो आता है 12,000 15,000 करोड़। सिर्फ मैं क्यूआईबी की बात कर रहा हूँ, रिटेल तो प्लस, वो प्लस कर दो तो 20,000 करोड़ के आसपास आता है। तो जो लेवल पे डिमांड आ रही है, 20,000 करोड़ की डिमांड, सामने ऑफरिंग है खाली 6,000 करोड़ का, तो अगर ये पूरा एब्जॉर्ब भी आ जाता है तो भी नेक्स्ट ईयर के लिए डिमांड के लिए पैसा है, थर्ड ईयर के लिए भी है, और वो कंटिन्यूस बढ़ता जाए। बट ये ऐसा भी देखने को मिला है जमीन जी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट लोगों का रुझान अभी भी स्टार्टअप फंडिंग की तरफ ज्यादा है। आपका क्या सेंस है इस बारे में कि पीपल वांट टू डू प्राइवेट फंडिंग बट दे डोंट वांट टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म एंड गेट लिस्टेड एंड टेक अ मार्केट वैल्यूएशन? तो बेसिकली सर, जैसे आपने बताया कि एसएमई के ऊपर थोड़ा सा प्ले मैनिपुलेटिव हो सकता है, ये इमेज की वजह से पीपल अवॉइड, स्टार्टअप्स अवॉइड गेटिंग लिस्टेड ऑन द एसएमई एक्सचेंज। वी एज अ प्लेयर्स आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द लिस्टेड एक्सचेंज। सो प्राइवेट प्लेसमेंट्स में और प्राइवेट इक्विटी मार्केट्स में वी हैव वेरी लेस एक्सपीरियंस, एंड we would rather not comment or think about it, because we really believe it is very less liquid market. Sure. So what are the two, three good sectors that you see or very bullish on where these companies are coming and getting listed amongst all? IT sector, solar sector, manufacturing sectors, this kind of sectors are very booming for SME companies, because ये sectors में जो SME की companies होती है उनमें potential बहुत होता है, उनको पैसा अगर मिले तो they can grow very fast। IT की कंपनी है, IT में growth करना आज के मार्केट के अंदर is very easy, मतलब if you go with the flow it is very easy। पैसा चाहिए कैपिटल एक्सपेंस करने के लिए। तो in today's market, the upcoming markets में, जैसे सोलर इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इनका बहुत ज्यादा बेस है, तो दिस कंपनीज वुड बी अ वेरी गुड बेट। Okay, so these are two, three sectors you feel that you're witnessing good amount of growth. बिल्कुल And because, like for example, a mid-sized company or a small company, if they get money and they can employ more human capital, obviously there are chances that they can grow 10x from here बिल्कुल and then eventually migrate to the main टू board. द मेन बोर्ड। I think great insights from you, Jaimin. थैंक यू विकास, थैंक यू। It was pleasure speaking with both of you. सेम यार, सेम यार। With that, would like to conclude the session here, and all those who would like to know more about this fund or more about them, please reach out to us at aipms.com, book an appointment, and we'll talk to you and give you more details. Okay, thank you. थैंक यू विकास, Thank थैंक you. यू। Bye. Thank you, Ankush. Thank you, Mr. Vikas. Thank you. Thank you.